Big manhunt for the man caught on camera opening fire during the riots in Delhi on Saturday. Cops are looking for the shooter, identified as Sonu. Faced stone pelting as he tried to enter his home in Jahangirpuri. After scuffle with security forces, they apprehended Sonu's wife for attacking the crime branch team. Brother Salim Chikna was arrested as well for rioting and attacks. According to reports, around 50 women in the area began protesting and throwing stones at the security personnel. Forces deployed in the area faced resistance from the women while they were carrying out search operations in the sensitive areas. Police team of Northwest District had gone to Sonu's house in the CD Park Road for examining his family. The police barricaded the area and women security personnel pacified the women. The incident took place 100 meters away from the spot where violence had broken out on Saturday. India Today's Arvind Ojha spoke to shooter Sonu's mother a short while ago. Listen in. हमारे साथ एक आरोपी सलीम चिकना की मां मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सलीम चिकना को पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया? बिना कसूर में अरेस्ट कर दिया, कुछ नहीं करा। हमारा बच्चा पूरा गोली वाला बोलेगा ऐसा अरेस्ट कर दिया उसको। तो क्या ये जो आप तस्वीर में दिखाइए जरा दीपक, ये जो तस्वीर है ये कौन है? ये हमारा लड़का है। क्या नाम है इसका? उसका सोनू है। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम सोनू है। सोनू, बाकी उपनाम और कुछ नहीं नाम ना। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग कोलकाता का रहने वाला, मोइसादाल हल्दिया हमारा घर है। तो ये पुलिस ने कुछ बताया कि सलीम को क्यों अरेस्ट किया? कुछ वाला नहीं, घुस नहीं दे रहा। अच्छा, घुस नहीं दे रहा। भगा रही तो सुबह गया, वहाँ से भी हम लोग को भगाया। हमारा बहू हम गया। ये आपका बेटा क्या करता है? कौन सा? ये बेटा क्या करता है? ये बेटा तो चिकन दुकान है। अच्छा, हाँ। तो ये कैसे वहाँ भीड़ में पहुँच गए? ये भीड़ में पहुँच गया, बोले हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रहा, तो वो रोजा खुलने का टाइम वो गया, कोई बच्चा से वो ये छीन के वो गुस्सा में वो चलाने लग गया। तो किसी को चोट नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। ऐसा धमकी दे रहा। जब बजरंग बली सब आया मानने को, तो हमारा लड़का उसको होते डर देने के लिए ऐसा ही बंदूक चलाया। तो वो उसमें नहीं था। काल के ऐसा ही वीडियो बना के कोई दुश्मनी करके बुढ़िया बना के छोड़ दिया। अभी ये कहाँ पे है सोनू? अभी कहाँ के डर में कहाँ भाग गया पता नहीं। पुलिस वाला आके तो हमारा ऊपर से नहीं दे, छानबीन कर रहा खाली। आपका घर कौन सा? ये वाला घर है? ये वाला। ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि सलीम, जो इनकी मां है, इनका कहना है कि सलीम बिल्कुल भी किसी तरह से किसी दंगे में शामिल नहीं था। उसका वैसा शौक में उठाया। हाँ। क्या भाई की वजह से तो नहीं उठाया? नहीं, गोली चला रहा था। नहीं, भाई के वजह से नहीं। पहले उसका नाम दिया, पहले उसका नाम दिया, बोला सलीम था, सोनू था। चलो जो गलती करा उसका नहीं तो उठाएगा वो। तो गोली चलाया तो क्या सोनू से आपकी बातचीत हुई? नहीं, हमारा बातचीत नहीं हुआ। घर नहीं आया ना, घर भी नहीं आया। यहाँ पर ये वाली कॉलोनी है जहाँ पर बताया जा रहा है क्राइम ब्रांच एक महिला को ले गई थी पूछताछ के लिए। उसके बाद ऊपर वाले घरों से देखिए, ये ऊपर वाले जो घर है यहाँ से पथराव की शुरुआत हो गई थी। ये देखिए नीचे, अगर दिखाइए अशोक, नीचे दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर ये सारी पत्थरबाजी, यहाँ पर कुछ ही देर पहले पत्थरबाजी की गई है और ये बाद से यहाँ से तुरंत लोगों को हटना पड़ा, क्योंकि यहीं पर अभी भी आप देख रहे हैं मशक्कत कर रही है पुलिस। कुछ देर पहले की भी तस्वीरें हमने भेजी हैं जब लगभग 50 से 100 महिलाएं एक साथ यहां पर आ गई थी गेट पर, और यहीं पर अभी भी पुलिस मशक्कत कर रही है, उनको पीछे रोक रही है, समझा रही है, क्योंकि कुछ ही देर पहले यहां पर एक बार फिर से परिस्थिति थोड़ी बेकाबू हुई थी और फिर से पत्थरबाजी की शुरुआत कर दी गई थी। छतों पर खास तौर पर वो जो पीला और नीला वाला घर है वहां से 3-4 पत्थर आए थे और ये वाले घर के ऊपर से भी पत्थर, और लोग इस तरह से बालकनी के पीछे छिपकर, रेलिंग के पीछे छिपकर पत्थर फेंकते हैं कि उनको कैप्चर कर पाना मुश्किल हुआ। लेकिन आप कल्पना कीजिए, भारी तादाद में यहाँ पुलिस बल की तैनाती है, मीडिया का भारी जमावड़ा है। इस तरफ की तस्वीर दिखाइए, इस तरफ ये दिखाइए, ये रिजर्व्ड आर्म फोर्स किस तरह से यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर पहुंचकर सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि पत्थरबाजी हो गई है उसके बाद से अपना हेडगियर पहनकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मिनटों के अंदर जब यहाँ पर पुलिस उन्हें समझा रही थी कि जांच के लिए हम पूछताछ के लिए ले गए हैं, तभी ये पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू हो गई और इस तरह के ईंट ऊपर से फेंके जा रहे थे, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर भी है, कुछ सीमेंट के भी टुकड़े हैं।
कुछ सीमेंट के भी टुकड़े हैं जो ऊपर से फेंके जा रहे थे। अब आरएएफ को भी वहां पर बुला लिया गया है, महिलाओं को बुलाया गया है क्योंकि मामला महिलाओं का है। महिलाएं यहाँ पर सबसे ज्यादा बवाल रच रही थी और आरएएफ को यहाँ पर बुलाकर सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। आरएएफ की तमाम महिलाएं आपको दिखेंगी। आरएएफ की देखिए महिलाएं अंदर घुसी हैं और अब उन घरों में जाकर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नौबत ऐसी आ चुकी है और ये तो उस चौराहे से काफी दूर है, लगभग 100 मीटर दूर है जहां पर उस दिन हिंसा हुई थी। लेकिन जो साजिशकर्ता अलग अलग गलियों में जहांगीरपुरी में घुसे हुए हैं, उनको पकड़ने की फिराक में जब क्राइम ब्रांच अपनी जांच कर रही है और लोगों को आगे ले जा रही है, तब इस तरह की नौबत यहां पर पहुंची है। और उसके बाद आरएएफ की तमाम महिलाओं को हेडगियर के साथ यहां पर बुलाया गया और वो फिर अंदर गई हैं और वो वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी आ गए हैं और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन्हें समझाया जाए। दरअसल जांच में अगर किसी एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद लोग तनाव में आते हैं और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अब लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं। कुल मिलाकर थोड़ी देर का इंतजार और है और उसके बाद आप देखेंगे ये जो पूरा इलाका है, एक बार जल्दी से अगर अपने वहां से भी तस्वीरें नजर आएंगी। अब तो यहाँ पर मीडिया का भारी हुजूम हो गया, उस वक्त जब हम आए थे तो नहीं था। ये देखिए ये घर है, यहीं पर ये ऐसे घर हैं और यहीं से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। मेन चौराहा दिखाइए, मेन चौराहा जहां पर उस दिन हिंसा हुई है वो लगभग 100 मीटर की दूरी पर यहाँ से है। लेकिन यहाँ पर जब एक महिला से पूछताछ की जा रही थी, उस महिला से पूछताछ करने के लिए जब उसे यहाँ से ले जाया गया, उसके बाद महिलाओं का पूरा हुजूम बाहर सड़क तक निकलता है, पुलिस वालों पर हमला बोलता है। जब वो नहीं सुनते हैं उसके बाद ऊपर छतों से पत्थरबाजी होती है और उसकी लाइव तस्वीरें आपने देखी। रिजर्व आर्म्ड फोर्सेस की तमाम ऐसी जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने हेडगियर लगाया है और अब वो इस कॉलोनी में अंदर गई हैं लोगों को समझाने के लिए और किसी तरह से शांत करने के लिए। जो आरएएफ की महिलाएं थी, दिखाइए जरा ऊपर से कैमरा दिखाइए, वो आरएएफ की महिलाएं जो थी वो बाहर निकल रही हैं। ये दिखाइए ऊपर से उस गेट के पास से जो आरएएफ की महिलाएं थी वो लोगों से बातचीत करने के बाद अब बाहर निकल रही हैं। उन महिलाओं को समझाने की जिम्मेदारी उन्हें ही दी गई थी और अब ये लोग वहां से निकल रही हैं। आरएएफ की एक पूरी ह्यूमन चेन बना दी गई है। ये दिखाइए ये महिलाएं निकल गई हैं और ये आरएएफ की एक पूरी टीम है जिसने यहाँ पर ह्यूमन चेन बना लिया है। ये दिखाइए ये ह्यूमन चेन है, ये ह्यूमन चेन इन्होंने यहाँ पर बना लिया है ताकि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए और मामले को ठंडे पड़ने दिया जाए ताकि कुछ देर तक यहाँ पर शांति बनी रहे। तो जितनी आरएएफ की महिलाएं थी जो अंदर गई थी समझाने के लिए और आरएएफ के ये पूरे ह्यूमन चेन यहाँ पर बनाया गया है जो फिलहाल शांति के लिए यहाँ पर एक चेन बना रहे हैं ताकि पूरे इलाके में शांति की बहाली फिर से कर दी जाए। Probe in the Jahangirpuri violence case deepens. Delhi police has detained Salim Chikna, the brother of Sonu, one of the accused in the case where a Shobha Yatra was targeted on the occasion of Hanuman Jayanti on Saturday. Sonu was also caught on camera seen firing from a pistol at a crowd. India Today exclusively spoke to the mother of the accused, who claimed that both the accused have been framed and claimed innocence. A forensic team is at the spot where the violence took place. A team of Delhi Crime Branch is also accompanying and assisting this forensic team. Both these teams have gone to the nearby mosque also. Till now, 21 people have been arrested in the case. Many have been detained. FIR in the case confirms stones were pelted on the Shobha Yatra. Some youth also opened fire at the religious procession. 100 videos are being scanned by the Delhi police. क्राइम ब्रांच ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है और इन्हीं घर की छतों से पत्थरबाजी हो रही थी। आप देख पा रहे हैं क्राइम ब्रांच का एक अफसर छत के ऊपर चढ़ा हुआ है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी इस छत के ऊपर मौजूद है, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे और यहाँ पर तफ्तीश की जा रही है। यहीं से कुछ पत्थर इकट्ठा किए गए, साथ ही साथ ये भी जांच की जा रही है कि कहीं घर की छतों पर अभी भी पत्थर तो मौजूद नहीं है जिसे एविडेंस के तौर पर कलेक्ट किया जा सके। तो क्राइम ब्रांच के जो अफसर है वो आपको छत पर दिखाई दे रहे होंगे, जबकि मैं आपको नीचे की तरफ भी दिखाना चाहूंगा। छत की तरफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट और क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल मौजूद है, जबकि नीचे की तरफ जो ये घर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्राइम ब्रांच के अफसर वो आपको बकायदा यहाँ पर दिखाई देंगे। इस घर को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और कई ऐसे वीडियो और तस्वीरें आई थी जिसमें बकायदा घरों की छतों से पत्थरबाजी हो रही थी। तो लिहाजा फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम घर के नीचे मौजूद है, क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल वो नीचे मौजूद है। Quick update from Kamaljeet Sandhu getting us more from Jahangirpuri.
Kamal, first of all, the situation as we speak, give us an idea about what's really happening, the kind of precautions that the police has taken, the bandobast there, given the sensitivities involved. You know, before I get you all the thing about bandobast and how and what police is doing, we have with us from Jamaat-e-Islami, we have a senior member with us. Sir, do tell us, you're the Vice President, but you're here to talk about peace and talk to Delhi police. What is your grievance, sir? See, till now we have met several people and families from where the children and boys and girls, even I was just now picked up from a house, a girl named Salma, 22 years, and she was just dragged out of her house, and she has been taken to the custody. And it's a, more than that day's terror, it is today's terror of police is much more than that. It seems that police is acting like they are in an enemy's area. They are like... Sir, Commissioner of Police Rakesh Asthana said that they will work irrespective of any... Will work. We want to see it to work. We want to see how many people have been arrested. We want to see that what action has been taken against those who are waving the swords, who are putting the slogans, and who are... You are here to meet the DCP. Yeah, yes. DCP, and we'll meet the Commissioner also. And we are planning to see the Home Minister of this Union Home Minister as well, because it's not a single incident. In 7 states it has taken place. Not a single incident, and let me just try and show you a lot of media persons out here. But clearly this case has been transferred to the Delhi Crime Branch. We'll just try and show you here. See the barricading all around, and there is the cyber crime cell because Delhi police have also said that the matter should not escalate, and they should monitor all sort of things, including misinformation, especially on the social media web. What is also clear is that there was a small flare-up today where when the crime branch went into Sonu's house, that is when some women pelted stones. Now remember, at this point of time, things are very precarious. There seems to be a fine balance, and there are additional security forces. The paramilitary is here, especially the CRPF and the Rapid Action Force. They're over to here to maintain law and order, to maintain peace, also to ensure that the peace committee meets, the Aman committee meets, they bring peace. Now we've been trying to speak to several people out here. They're saying that the Hanuman Jayanti Yatra, the Shobha Yatra, has gone on for several years, but never has such an incident taken place. So clearly, at this point of time, the onus responsibility very much with Delhi police. They're saying this is going to be non-biased, unbiased investigation, and whether the culprits are from majority or minority community, they will act on it. But yes, there are several voices of concern that earlier communal violence had taken place, clashes had taken place in Northeast Delhi 2 years ago, and now again in Northwest Delhi, this has become a center point of sorts. So they have to bring the situation and have to ensure that there's no further flare-up. What about the accused in this case? Do get us more details about Sonu, his brother as well. Are they habitual offenders? Are they history sheeters? What are the details that you can share with us right now about how all of this was really planned? What more can you tell us? Come on. See, Sneha, 23 persons have been arrested. 2 of them are juveniles. So clearly the pressure is on Delhi police because they have identified miscreants. At least 8 of them, including Aslam, are history sheeters. They'll have to actually go through and scan through all that footage. And that is why you see not just crime branch, but different polices out here. They're obviously there to ensure that there is no flare-up, and then the investigations do pick up pace. What we also know is that as far as Aslam is concerned, now if you see all these garbage bags which have been put all around, there has been a business which has been done on this particular area. So that person seems to have a hold out here. And the other part is, as far as Sonu is concerned, who's seen wielding a gun, that is also another point of investigation as to how he procured it and how it is being utilized. So many of them are being pinpointed as those who are history sheeters, who have a past antecedent. So that should not have been very difficult. But what is the problematic area is about how
Delhi police is in center of a blame game. This is where Rakesh Asthana, the CP Delhi, has said that the investigations are completely going to be unbiased. There have been several charges, and as the Maulana Sahab was talking about how they're going to meet the Union Home Minister, there is going to be an issue which is going to be raised that this is an incident pertaining to one particular area or a state. It's been in Karoli, in Khargone, and now Jahangirpuri. And this is where the concern is that things should be okay, things should not flare up. Investigation should be taking place, but the heart should be in the right place. All this is being now said, but clearly on ground, I'll try and see if we can try and get you top officers on ground here now, trying to get a sense as to what really is happening. Clearly, at this point of time, we'll try and get a sense as to, ma'am, how are things picking up pace? Things are under control. Please allow me to work. I'll inform you later. There have been arrests of some women. We'll speak later, please. So obviously, trying to get you a sense out here, senior officers are doing the round, and this is what has been instructed by the Home Minister himself, that senior officers will be manning the ground. Situation will be brought under control. But clearly, as we saw today, a minor incident can cause a flare-up, and they have to ensure that things are in order. But clearly, once you see, and we can try and show you the policemen out there, the body language is more relaxed, so things seem normal at certain times, and obviously a certain flare-up can immediately trigger something, and that is what is being cautioned against. But right now, Shobha Yadra incident, and hopefully Delhi police is hoping that once the culprits are booked, things would be slowly back to normal. All right, Kamal, thanks for getting us all of those details. We'll of course keep coming back to you for more on that. Now, staying with this, politics over the Delhi violence has exploded as a full-blown war of words between parties have erupted. Calling for an NIA probe into the clashes, BJP MP Hansraj Hans claimed that Jahangirpuri incident was an international conspiracy to defame India. This as MNS Chief Raj Thackeray called for a tit-for-tat response to such violent incidents. Meanwhile, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi targeted the Union Minister Amit Shah for violence that erupted in the national capital. He said clashes have become more common in Delhi ever since Shah took over as the Home Minister. In the violence that broke out on Saturday, 20 people, including the prime accused, have been arrested. 10 teams are carrying out the investigation. Over 200 videos of violence are now being scanned by the police. मैंने यही पाया कि पीछे कोई साजिश है, जैसे सीक्वेंस बना के पहले किसी और स्टेट में फिर कोई ना कोई हो सकता विदेश से कोई ऐसा कोई नेगेटिव बैड एलिमेंट्स हैं जिनका काम है, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई मजहब नहीं होता, जालिम का धर्म जुल्म होता है। भाजपा ने अपने देश भर के कार्यकर्ताओं को एक संकेत दे दिया कि गुंडागर्दी अच्छी चीज है, तुम हिंसा करो, तुम जितनी ज्यादा गुंडागर्दी करोगे, तुम जितनी ज्यादा लफंगाई करोगे, हम तुम्हें उतना ज्यादा सम्मान देंगे, तुम्हें इतना ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी दंगे कराती है, भारतीय जनता पार्टी हिंसा कराती है। वरना ऐसा कैसे हो गया कि आम आदमी पार्टी शोभा यात्रा कराती है तो वहां पे कोई दंगा नहीं होता, लेकिन जहां पे भाजपा खुद किसी कार्यक्रम का आयोजन कराती है वहां पे गुंडागर्दी भी हो जाती है, वहां पे हिंसा भी हो जाती है, वहां पे दंगे भी हो जाते हैं। तो साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद दंगे करवाती है, खुद हिंसा कराती है और उस गुंडागर्दी को बढ़ावा देती है। देखिए, इसमें जुलूस वालों का ज्यादा रोल है। आप वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके देखिए, वहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि जुलूस वाले बाज़ाब्ता बाकायदा मस्जिद के आगे खड़े हो रहे थे, वहाँ पर बैनर लगाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर कुछ हथियार लहरा रहे थे, वहाँ पर गलत किस्म के डीजे बजा रहे थे। आप वहाँ से रिपोर्ट लीजिए तो उससे आपको पता लगेगा कि कुछ लोग चाह रहे थे कि झगड़ा हो। और मैं इसमें हिंदू धर्म वालों को नहीं कहूँगा, किसी धर्म वाले को नहीं कहूँगा। मैंने कहा कि ये राजनीतिक खेल है और कुछ लोगों का अपने अपने मकसद हैं, कुछ लोगों का झगड़े में फ़ायदा है, कुछ लोगों का शांति में फ़ायदा है। तो हमें तो यही चाहना है, यही करना है कि हर जगह प्यार और प्रेम रहे, सांप्रदायिक सद्भाव रहे। ये देश सबका है, सबका ही रहना चाहिए।
राजी, yesterday in Delhi प्रोसेशन हो रहा था हनुमान जयंती पे और स्टोन पेल्टिंग हुआ वो प्रोसेशन पे, उसको रास्ता मुझे लगता है उनका ऐसी चीजों का जवाब वैसे ही देना चाहिए उन लोगों को, अदरवाइज उनको समझ में नहीं आएगा। The investigation behind the Jahangirpuri communal clash continues in full swing to catch the perpetrators of the violence. A letter petition has been moved before the Chief Justice of India, N.V. Ramana, to take suo motu cognizance of these riots. The law has alleged that Delhi police investigation so far has been partial, communal and directly shielding perpetrators of the riots. The petition stated that this is the second time that riots have erupted in the capital city, and on both the occasions only minority community members are being blamed. Meanwhile, lawyer Vineet Jindal has filed a plea in Supreme Court seeking handing over of the investigation to the National Investigation Agency to hunt down links of involvement of ISIS, other terrorist outfits. Plea says that clashes broke out in 7 states during Hindu festivals of Ram Navami and Hanuman Jayanti. Since past 10 days, we have seen different stone plating incidents. 3 persons have been died, several thousands of persons have been injured severely. So the state police has been investigating this matter, but for this kind of matter, a specific purpose, NIA has been formed. That's why I have filed a PIL to hand it over that investigation. So the investigation should be taken place in a complete manner, and the investigation should be completed as soon as possible, because this is an act of sovereignty of our against sovereignty of our country, and we have not been denied, because this is not a coincidence. As Ram Navami position and recently the Jahangirpuri incident on Hanuman Jayanti Yatra, which has happened, we have seen, and there is kind of question mark upon the timing of this incident. So in last 10 days, 7 cities have been affected and several people have been targeted. Ram Navami position has been targeted. Hanuman Jayanti Yatra has been targeted. Yeah. So we can we are surely say that they are a hand of this kind of organization like PFI and IS connection should be there. So this kind of matter should be investigated by the NIA. No end to the loudspeaker controversy in Maharashtra. The government has passed an order that it is mandatory to seek permission from local authorities to have loudspeakers at religious places. In fact, Home Minister Dilip Walse Patil will be holding a meeting with DGP today to direct all police commissioners regarding the issue. Loudspeakers have to be allowed at religious places only after due permission. The Home Minister is also set to meet Chief Minister Uddhav Thackeray at noon, and the loudspeaker issue is likely to be raised in the meeting this tomorrow. Remember, the controversy began when Maharashtra Nav Nirman Sena Chief Raj Thackeray gave an ultimatum to the Maharashtra government to remove loudspeakers from mosques by the 3rd of May and threatened to chant the Hanuman Chalisa if the order was not followed. Controversy over loudspeakers refuses to die down, even as the MNS has raised this issue not only with the Maharashtra government but also with the Union Home Minister, saying that the court's orders must be followed and loudspeakers in mosques must not be allowed. तुम्हाला जो काही नमाज पढायचा आहे, तुम्हाला जी काय अजान द्यायची आहे घरामध्ये द्या, आणि जर सांगून जर समजा तुम्हाला समजत नसेल की हे भोंगे खाली उतरवा, तुम्ही आम्हाला विनाकारण त्रास देऊ नका, हे जर नीट सांगून समजत नसेल तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार.